मतलब अपने विचारों का प्रकाशन, अपनी बात को स्वतंत्र तरीके से सबके सामने रखने में अगर हम सक्षम हैं तो सही मायनों में हमारी ये अभिव्यक्ति कही जाएगी। आप सब आज अपनी अभिव्यक्ति के जरिए अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करने वाले हैं, जिसके लिए तैयारियां भी बहुत की हैं। हम आपकी अभिव्यक्ति को देखने, सुनने, समझने के लिए भी उत्सुक हैं। हम सबके लिए गौरव का पल है कि आज हमारे बीच चीफ गेस्ट के तौर पर देश के जाने वाले अभिनेता बोमन ईरानी जी मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी हमारे लिए प्रेरणास्पद है और अभिव्यक्ति 2023 के इस मंच को नई ऊंचाइयां देने वाली है। अपने लंबे करियर में बोमन ईरानी जी ने कुछ ऐसी फिल्में में भी काम किया है जिसकी कहानी शिक्षा जगत से जुड़ी हुई है। मुन्ना भाई MBBS के डीन हो या 3D के जीव सहस्त्र जिन्हें कॉलेज के छात्र वायरस के नाम से पुकारते हैं। इन पॉपुलर कैरेक्टर्स के जरिए बोमन ईरानी जी ने शिक्षा की भी संगतियों को उजागर करने में योगदान दिया। साथ ही नए दौर की शिक्षा कैसी हो इस पर भी फोकस किया। मुझे पूरा विश्वास है आप सब बच्चों को आज बोमन जी के जीवन मूल्यों और विचारों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं ये यहाँ बताना चाहता हूँ, NS गोयल वर्ल्ड स्कूल की स्थापना के वक्त हमारा भी यही लक्ष्य था। हम एक ऐसे शिक्षण संस्थान को आकार दे सकें जो आधुनिक शिक्षा के सूत्रों को हमारे प्राचीन संस्कारों के साथ पिरोकर बच्चों को दीक्षित और शिक्षित करे, उन्हें ज्ञानवान बनाएं। साल दर साल हम ये करने में कामयाब हैं। इस बात का हमें संतोष है। आज NS गोयल वर्ल्ड स्कूल अपनी स्थापना का 15वां वर्ष मना रहा है। इस अहम मुकाम तक पहुंचने से पहले हमने कई पड़ाव पार किए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित की। आज देश में इस स्कूल की विशिष्ट पहचान है। खेल सुविधाओं में हम अग्रणी हैं तो बोर्ड परीक्षाओं में भी हमने सफलताओं के शिखर को छुआ है। इस मौके पर विद्यालय प्रबंधन, शिक्षक और बच्चे विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं। जैसे बगीचे की सुंदरता फूलों से है, वैसे ही बच्चों ने इस स्कूल को सजाया है। खेलों में पढ़ाई और सामाजिक जीवन में स्कूल के बच्चों ने अपना विशिष्ट योगदान दिया है। एक पौधे को वटवृक्ष का आकार दिया है। इस वर्ष वार्षिक उत्सव में नवरस थीम पर बच्चों ने कार्यक्रम तैयार किया है। जानकर अच्छा लगा कि बच्चों को जीवन का सार समझने का अवसर भी मिलेगा। बादलों के बीच पानी की बूंदों से छनकर जो इंद्रधनुष बनता है तो यह संकेत है कि हमारा जीवन भी ऐसा ही रंग बिरंगा है। नवरस मन के भाव हैं, जिन्हें बच्चे समझने लगे तो जीवन सरस लगने लगेगा। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि पढ़ाई का मकसद केवल डिग्री बटोरना है, बल्कि योग्य बनना है। हमारे प्राचीन ग्रंथ यही कहते हैं कि विद्या से विनय, ये संस्कृत का श्लोक है लेकिन इसमें हिंदी में लिखा है, विद्या से विनय और विनय से सुपात्र, सुपात्र बनने से धन प्राप्ति और धन से धर्म और धर्म के पालन से हम सुखी होते हैं। तो ये सूत्र अगर आप सब याद रख सकें तो समझिए पूरा जीवन हम सही रास्ते पर रहेंगे और कामयाब भी होंगे। आप सभी को एक बार फिर से बधाई और बोमन जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने समय निकालकर हमको यहाँ पे हमारे बच्चों के लिए मार्गदर्शन देने। जय छत्तीसगढ़। Thank you, sir, for your motivational words. I warmly request Shri Suresh Goel ji and Shri Rajendra Goel ji to present a memento to our distinguished chief guest commemorating his visit to NS Goel World School. Please, sir.
are truly honored to have Mr. Boman Irani today. Sir, we invite you to the dais to share your words of wisdom and encouragement. Please, sir. Thank you. All right. Good evening. Listen, when I go home after work, my wife gives me more applause. ये क्या है? I'm joking actually. She doesn't need any applause. She's like, खाना kitchen में जाके ले लो. I'm joking, but I didn't ask you to applaud for me. I wanted to applaud for the speakers, the people who have come and presented such a wonderful evening, kick-started it, the band, the choir, the children, the two kids who welcomed me, the kids who sang the school anthem, wonderful people on the dais, the principals, the teachers, the parents. So a big round of applause for everybody, not for me. Not for me. मैं तो बिगड़ा हुआ बच्चा हूँ. All right. So, by the way, just in case you don't know, my name is Boman Irani. खाली clarify कर रहा हूँ. आप लोग हंस रहे हैं क्या बात है? So, why am I telling you this? In life, I'd like to tell the children, never take anything for granted. Never take anything for granted. You should not assume. You should not assume that people know you. That is an arrogant assumption. And I'll tell you why I came to this conclusion. I was on a flight, and it was a very early morning flight to Raipur. It's always early morning only. And one gentleman who was talking loudly on the phone, जोरों से बात कर रहा था. You know the type. You know the type, right? To disturb the peace. And he spotted me, and he said, "Oh!" He started getting excited. I said, "Very good. मेरा favorite actor. मेरा दुनिया का सबसे favorite actor." He started shouting, and I was getting very embarrassed. And then words were not coming out of his mouth. He got breathless. Favorite actor. I am getting so embarrassed, my friends. The whole plane is smiling away. And then he comes to me, झुक के मेरे कान में बोलता है, लेकिन इतने जोरों से बोलता है कि the whole plane can hear. भाई साहब, आपका नाम क्या है? उसके बाद I made up my mind. Never assume that people should know you. Stay humble. That's the first lesson I learned in life. Correct, Ati? Correct? All right. So a little about me. A little about me to make you understand why am I telling you all these stories. Achha, I have been asked to speak for कितना 2.5 घंटा? अभी 4 to 5 hours? अच्छा 45 minutes. अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं. सब लोग डर गए. I'll speak for only 2 hours. चलो ठीक है. A little about me, just so we understand what are the learnings that I have taken away from my experience. What are the learnings, what are the teachings? In every single thing in my life, I have picked up something. When I was a child, I was born before, or rather, sorry, I beg your pardon, I was born after my father passed away. So I was in my mother's womb. My mother had 3 little daughters, so I had 3 sisters, and I came into this world not knowing what a man is. And because of that, I was very, very protected. I had female protection, which is a good thing to have, because the power of the female protection makes you stronger, but it also makes you softer. Because I was protected from the world because I lost my father. I had a speech defect. And many of our children have some little idhar-udhar. And I used to speak like guess who?
I used to speak like virus. I used the speech that I used to do as a child and put it into virus's mouth. It was my greatest weakness as a child, I thought. And I decided to use my weakness as a strength. That's a learning in itself, is it not? See, I'm not asking for your applause, but every time I feel that is my message reached you, if you give me a small little thing, I'll understand कि आपको समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ. It's not for my ego. Ego बीवी पे है मेरे घर पे to put me in place. Anyway, I went for my school interview as a little child, and Father Monmouth was the principal, and he said, Mrs. Irani, we'll get your child into school, no problem. My only thing is I have to do the test. So he showed me a photograph. He showed me a photograph of a horse. अभी horse S आता है उसमें, correct? HORSE. और मैं S नहीं बोल सकता था, virus S नहीं बोल सकता. Horse ऐसे बोलेगा. मैं छोटा, I used to squeak, I used to stutter, I used to stammer, और मैं एकदम ऊंचे सुर में बात करता. ऐसे बात करता था. तो मैं बोला अगर मैं बोलूंगा तो फादर समझेगा कि मुझे अक्ल नहीं है, तो मैंने जुबान ही नहीं खोली मेरी. मैंने कोई बात नहीं. फादर से नो प्रॉब्लम. He took out another photograph. He showed me a mouse. माउस में भी ऐसे है. तो बोला अब क्या करूं मैं? तो मम्मी मुझे बोल रही बोल. मैं तो बोलने वाला ही नहीं हूँ, क्योंकि उसमें ऐसे मैं फंस जाऊंगा. वो समझेगी मेरे को खामी है. मैं तो माउस करके ऐसे बात करता था. मैं लोग हंसते थे तो मुझे बुरा लगता था कि मुझ में कुछ कमी है. But never let your children feel that there is something wrong with them. ये तो बहुत, this is a very small problem. It's a very small problem, but the child takes it in a very big way. And I did not want to disappoint my mother, but I did. I did not get admission in St. Mary's School. 10 days later, and this is what you were saying, Ravindraji, you were explaining so nicely to me. 10 days later, Father Molinet calls up my mother and says, Mrs. Irani, we are educationists. We have made a big mistake. She said, what happened? Which child doesn't know what a horse is? Which child doesn't know what a mouse is? He's just a nervous child. He's just a shy child. He's afraid to talk. The day he starts talking, he won't keep quiet for 2 hours speech, remember that. फंसा के रख दिया ना तुम लोग. And that was it gave me a lot of confidence. लेकिन स्कूल में I had 2-3 small problems. एक तो मैं बहुत shy था. मैं दिखता नहीं shy, लेकिन I am very shy, believe it or not. I had dyslexia. And worse still, I still have dyscalculia. मतलब numbers मुझे समझ में नहीं आता. कोई भी number I cannot remember for even 3 seconds. You ask me my flight timing or my flight number तो जाने दो. Flight का timing पूछो, 5 मिनट के बाद मैं भूल जाऊंगा. Room number, होटल का room number मुझे आप बोलेंगे go to this room. I'll forget the room number because I have dyscalculia. I have a confusion of numbers. Even today, it is a learning deficiency. We all have some kind of deficiency. Everybody cannot be a genius. And I tell you, I am telling you this story. आज भी अगर आप बोलेंगे कि मेरा रूम नंबर है, मैं गलत रूम में ही चले जाता हूँ. सच्ची. Sometimes I go on purpose, but लेकिन इधर मैं बात नहीं कर सकता. So, what am I trying to tell you this for? No child is perfect in the way you think they should be perfect. They are perfect. They are the creations of God and they are the greatest gift. It is just that your sense of perfection is different from somebody else's sense of perfection. For you to say my child should get 90, 102, 100 in maths, it's okay. I never got more than 14 on 100 in maths. वो भी मैं भी भूल गया. 14 मिलता था कि 7 में वो भी याद नहीं मुझे. But that doesn't make me imperfect. I'll tell you what is perfection. The kids in yellow who were singing, you saw how they were singing? There was one child who was doing,
I was going to say, बच्चा माइक में गा, बच्चा माइक में गा. फिर मैं सोचा, let her be. You know why? Because she's happy. Make your children happy. Don't make them perfect. That is perfection. By singing in the mic does not make them any better. They practice, but they are happy. I'll tell you a personal experience of mine. I was very, very nervous as a child, right? One day, I was just like that child standing on stage with the choir. Same. Only I was wearing white shirt, white pant, इतना बड़ा बो, लाल कलर का, पेपर का बनाया था, सस्ता स्कूल था, इतना बड़ा बो, लिपस्टिक रूज, और लिपस्टिक और रूज, और मैं पलट के हमेशा आप लोगों को देखता हूं कि आपका रिएक्शन क्या है. मेरे लिए नहीं, बच्चों के लिए. मेरी माँ आई थी, and she was sitting somewhere there in connection to the stage. Are you listening, na, बच्चा लोग? You can hear me, na? Oh, very good, darling. So my mother is sitting over there, and my mother is smiling. मैं तो गाना भी नहीं गाया था तब तक, but she's smiling. You know why? Because she saw her nervous child who never spoke. He was smiling. That's all. That's all. And